Hello, hey, if we have started, I cannot hear anything. Hello, hi everyone. Am I audible? Yes, Akash, you are. Yes, yes. Not audible. Okay, Yes. wait. So let me share my screen. Okay, so recording also has started. Guys, is my screen is visible? Yeah. Check. Yes. Okay. So before jump to the main session, I have a one question to all of you guys. Can anyone tell me what are the roles and responsibility of a business analyst after the kickoff meeting? Yes, can anyone? Hmm. As a business analyst, what's your roles and responsibility after the kickoff meeting? Yeah, after the initial meeting. To prepare the BRD. To prepare the BRD. Okay, all right. Anyone else? Already discussed in detail in the requirement gathering and the elicitation process, guys. User stories. No, 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 not user we story. we we first make Feasibility analysis. Feasibility analysis. Okay, feasibility analysis. Prepare requirement gathering plan. Prepare requirement gathering plan. ठीक है. Okay. Interviews. Interviews. ठीक है. Interviews. MOM. MOM. Brainstorming. Brainstorming. Prepare JD. RFP. RFP. Okay. Cost estimation document. Cost estimation document already in the RFP. Okay. To understand and organize requirements. Okay. To categorize which requirement to be done when. Any another responsibility और कोई है? मुझे तो ये तीन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है. Is it clear or not? बोलो भाई. Yes. So after the kickoff meeting or after the initial meeting as a business analyst, first of all you have to go with the MOM or the feasibility analysis or the request for proposal document. Okay. So in this meeting we are going to discuss about the documentation. Okay. So there are number of documentations are available. कौन कौन से documents होते हैं किसी को पता है? BRD, FRD, SRS. The very first document is request for information. This is RFI. Acha, without documentation, will you guys start the project? No. No. Okay. Second document is request for request for proposal document. That's RFP. RFP. Third document related to business requirement document. Like BRD. Next is functional requirement document. FRD. System requirement document.
SRD, or sometimes known as the System Requirement Specification, that is SRS. ठीक है, सो दीज आर द मेजर डॉक्यूमेंट. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट और होते हैं, लाइक PRD, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट मेजरली एज ए बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दीज डॉक्यूमेंट. सो राइट नाउ आई एम डिवाइडिंग द होल points into the two part. So this is the second part and this is the first part. So in the first part, we are going to discuss request for information document or request for proposal document. Or in the second part, we are going to discuss about in the detail the business requirement document or the functional requirement document or the system requirement document. So in the second part, all we will also discuss about who create these document, what level of information available in this document, and very important, in which stage these document will create it, and who use these document, and what is the purpose of this document. So as a business analyst, you have to know about the difference, the major difference between all these documents, because as you see that the requirement word, सब में requirement word है, ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ पे है. So as a business analyst, you have to know the major difference between all these kinds of documents. See, in the interviewer will not like say that कि please share your screen and then create the BRD and create the FRD and create the SRD, और या फिर create the RFP बनाओ या RFI बनाओ. ठीक है, they simply ask a question कि what is the content in RFP, what is the content in BRD, what is the content in FRD, just simple. क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yeah. Clear. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. क्या समझ में आ रहा है? ये 3 वर्ड लिखे हैं मेरे पास, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. क्या समझ में आ रहा है? We will ask the client regarding this देखो, product or something. let me tell you one thing, guys. As a business analyst, first of all, you have to know what is the document, why it is created, when it is created, who create it, and also who respond on these document. ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. एज ए बिजनेस एनालिस्ट, यू गाइज हैव टू नो अबाउट डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट या व्हाट इट इज. ठीक है, एंड व्हाई इट इज क्रिएटेड, क्यों क्रिएट हम लोग इसको कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन इट इज क्रिएटेड, कौन सा डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हो रहा है, हु क्रिएट इज, कौन क्रिएट कर रहा है, और हु रेस्पॉन्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, कौन उस पर रेस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, एंड देयर इज नॉट एनी सीक्वेंस के पहले BRD बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट BRD, देन FRD, देन SRD. नो, this totally depend upon the company culture. Some company follow the culture of direct system requirement document के BRD नहीं चाहिए. Some company follow the sequence culture. नहीं, first of all RFP, then BRD, then FRD, then SRD. So that is depend upon the company to company. But as a business analyst, this is your core roles and responsibility of the documentation, like requirement gathering and the requirement elicitation. So you know how to create the document. समझ में आया? Yeah. कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का है? एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ जहाँ डाउट है डॉक्यूमेंट के अंदर कि नहीं ये नहीं, ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होगा. ठीक है, अब बताओ. अब माई क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज 3 वर्ड्स, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. क्या समझ में आ रहा है? बहुत कॉमन है ना, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बहुत कॉमन है. जो भी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन क्लाइंट चाहता होगा बनाने के लिए, फिर उन्हें क्या चाहिए फीचर्स, तो वो हम लोग क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, स्टेक होल्डर से डिस्कस करेंगे. नहीं, अब चलो क्लाइंट अभी छोड़ दो, लिव इट द क्लाइंट, लिव इट स्टेक होल्डर एंड ऑल. बस ये बताओ मुझे कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से क्या समझ में आ रहा है, खाली इन 3 वर्ड से. Akash, we are requesting for some information. रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन. ओके, ऑलराइट, ठीक है. देखो,
request for information always and always coming from the client side. Okay, this request for information is just like a question type document. Okay, later I will um, tell you how do you create the document. ठीक है, बताऊंगा बाद में कैसे कैसे किस तरीके से कैसे बनता है. ठीक है, we are not creating the RFI. Always and always as a business analyst or as a company we have to respond on the RFI. ध्यान रखना ये बात. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि दिस इज क्लाइंट ए. ठीक है, एंड दिस क्लाइंट्स वांट्स ए प्रोजेक्ट. कुछ चाहिए, इसको कुछ बनवाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल he or she will float the RFI into the market. And RFI is also known as the market research tool. So from the client side who want anything or who want a project related to e-commerce, related to healthcare or related to anything, so RFI is just like a question type document where client send to the vendor to gather the journal information about their services, about their product, about their capabilities, about their experience. ठीक है, so RFI is just like a market research tool where client doesn't know about the vendors, about the vendor product. ठीक है, RFI क्या है, एक तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, सिर्फ 6 से 7 पेज का रहता है. दैट्स इट. उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है क्लाइंट की साइड से, नॉट कंपनी की साइड से. कंपनी उस पर रेस्पॉन्ड करती है. ठीक है, so in RFP as I told you that it is just like a 3 to 6 page document, and in this document a questionnaires types points over there where clients send it to the vendors to gather the general information like their services, their capabilities, their experience and all and all and all via email, via newspapers and all. ठीक है, तो RFI जनरली क्या है? RFI अब बताएगा कोई मुझे, व्हाट इज RFI? डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनाने हैं. अगर डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आया ना, यू कैन नॉट एबल टू जनरेट और क्रिएट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. At the last, I will also share how to create the document with the help of AI tools like ChatGPT and all. But first of all, you have to understand the basic part. ठीक है, हमें क्या बनाना है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, व्हाट यू क्रिएट. तो RFI हम नहीं बनाते. RFI क्लाइंट की साइड से आता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट साइड RFI. तो RFI क्या है, व्हाट इज RFI? Basically, it's client query, client's question, what is client looking for, and what is his target to approach business analyst. Means it is client request basically. हाँ, it is a client request. Okay, so again I'll tell you कि it is just like a questionnaire type document where clients send it to the vendors. And here the meaning of vendor is companies, service companies, solution companies, product based companies, service based companies, and to gather the general information about their services, about their product, about their capabilities, about their experience, about their past work. So it is just like a market research tool. Remember this word, market research tool. Okay. And this RFI, why it is created? This RFI is created to understand the available solution in the market. Let's suppose that I am a client and I want a feature or I want a product. So first of all, I have to create RFI and float that RFI into the market via mail or via cold mailing or via newspaper and all to understand the available solution in the market. Is there any available solution in the market or not? Okay. So the second thing is related to the vendor selection. तो टू evaluate which vendor are worth consider further. ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. So to avoid wasting any time in the detailed proposal, if the vendor is not capable, so RFI हम लोग बनाते हैं. And when it is created, so it is created at the very initial step or very initial phase of the project planning, even before the requirement are not finalized. ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट फाइनलाइज ही नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है. ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो है उसको फ्लोट करा दो. फ्लोट कराने के बाद वी विल गेट द वेंडर्स, वी विल गेट द वेंडर इंफॉर्मेशन. बताऊंगा अभी और कैसे बनते हैं.
ठीक है. And who create it? Always and always client organization created, or procurement team created, business stakeholders, or sometime it is assisted by the business analyst to draft the questions. Why draft the questions? Because I told you that a request for information is just like a question type document. Okay, where you're going to requested a general question or gathering the general information from the vendor side, from the service based company or the product based company. Okay, and on this request for information document, the vendors or service based company or service provider, ठीक है, react with the company details, the portfolios, the case studies and all and all and all. समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरी Yes. क्लियर और नॉट? Yes. RFI. Yes. ठीक है. जैसे let's take an example to understand better what is RFI. तो let's suppose that कि ए रिटेल कंपनी है मेरे पास कोई, है ना, देर इज अ रिटेल कंपनी हु वांट्स टू इम्प्लीमेंट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट दे डजंट नो विच कंपनी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक, है ना, which company handle the integration with the ERP. So due to these kinds of problem and situation, they float an RFI and asking vendors, okay, what's your experience in the large scale of retail, or which technology do you use, या फिर what's your average implementation time, what's the cost estimation and all. So I hope that कि request for proposal, request for information clear हुआ होगा कि request for information actually क्या है. And this is the favorite question from the interview side, what is the difference between request for information and the request for proposal. बहुत लोगों को नहीं पता होता है. ठीक है, clear? Yes. Let's take a practical example to understand the request for information in the better form. So let's suppose that we have a scenario. Okay, and the scenario is related to let's take a healthcare example. So there is a hospital group in India. Let's take Apollo Hospital. Okay, so they want to implementation. They want to implement a telemedicine platform. किसी को पता है what is telemedicine platform? क्या होता है? कॉल करके पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन बता के मेडिकल ऑर्डर कर सकता है अपनी मेडिसिन. हाँ जी, ठीक है, telemedicine platform. So they want a medicine platform so patient can easily consult doctor online with the help of video call, with the help of chatting, or with the help of it. But the thing is that the problem is there कि but the hospital has not any idea कि which vendor in the market are capable of providing such a solution. उनको नहीं पता है. So क्या करेंगे? So instead of directly asking for the request for proposal, they first float a request for information to gather the journal information about the possible vendors. ठीक है. So let's suppose that कि मेरे पास अगर एक client है, if I have a client, like if I am a client and I am a Apollo hospital, so I have two scenarios. The scenario number first, according to my requirement, is first of all I have to float the request for information, and on the behalf of that I will select the vendor. This is the first scenario. And the second scenario is that okay, first of all I have to go with the search engine optimization process, okay, with the help of keyword like best telemedicine platform in India or best telemedicine platform companies in Chandigarh or in Delhi or in Noida. Okay, so after that the SCRP give me some result. So on the behalf of that result, I will mail to every company or I will just call for the request for proposal document. So the second scenario is just like a hectic scenario, है ना, थोड़ा हेक्टिक सिनेरियो हो जा रहा है. सो दैट्स वाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऑलवेज, या फिर जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, दे ऑल विल गो विद द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. ठीक है, सिनेरियो समझ में आया है सबको? व्हाट इज सिनेरियो ओवर हियर? Yes, sir. ठीक है, तो सिनेरियो इज कि कोई भी एक अपोलो हॉस्पिटल है, दे वांट ए टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म
ठीक है, and on the behalf of that they just initiate the request for information. So as I told you that the request for information is usually 3 to 6 pages. ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 3 कभी कभी 4 पेज का, 5 पेज का, 6 पेज का होता है, ठीक है. एंड इट्स लाइक ए क्वेश्चंस प्लस सम इंट्रोडक्शन पार्ट. तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पार्ट, this is the content. I'm telling about the content over here. RFP content, RFI content from the client side. Abhi there is a no role of business analyst. We are discussing over from the client side. So from the client side, the very first part is the introduction. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन या फिर बैकग्राउंड. Second is related to the purpose of the RFI. ठीक है. Next is related to information requested. ठीक है, जिसमें हम लोग we are going to mention the questions. And the fourth is related to submit or submission guidelines. ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? What will come over here in the introduction part? You all know the scenario, and can you please tell me about the introduction part? सबको सिनेरियो पता है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, यही कंटेंट होता है. दिस इज द कंटेंट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट साइड. With the help of this, they can easily create the document that is request for information and float into the market. इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? Apollo Hospital providing healthcare services. नहीं. सिनेरियो क्या है? सबसे पहले सिनेरियो को दोबारा से सुनो. सिनेरियो क्या है? अपोलो हॉस्पिटल को टेलीमेडिकेशन प्लेटफॉर्म चाहिए. दे नीड ए टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म. देन फ्रॉम द क्लाइंट साइड कभी कभी ये भी होता है कि बिजनेस एनालिस्ट इज ऑल्सो असिस्टेड टू द क्लाइंट कि भाई चाहिए क्या या फिर कैसे लिखना है, तो ये भी आपको आना चाहिए. ठीक है, हाँ. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखोगे? Telemedicine platform required. ठीक है. और anyone else? On the basis of the scenario, what you guys are going to mention in the introduction or background part? The existing system, what they're currently following. Existing system. Why existing system? There is not any linking between existing system in the and the RFI. RFI is totally new, na. Client want a properly new solution. That's only they floats the RFI. Okay, so what is their basic agenda for sending the RFI? That's what they mentioned. Anyone else? और कोई बताएगा मुझे? About the organization. About the organization. And project like healthcare provider looking for a telemedicine solution. ठीक है. Alright. देखो, from my side, introduction part में ये होना चाहिए कि Apollo Hospital is planning to launch a telemedication platform for video consultation या फिर appointment booking और e-prescriptions. और यहाँ पे they just also mentioned that we are currently exploring the vendors who have expertise in the healthcare IT solutions. So there are two major points which a client have to mention over the introduction part. The first part, what क्या करने वाले हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं. ठीक है, so planning is to launch the telemedication platform, simple सी बात. And the second is we are currently explore the vendor part. So इतना ही आएगा इसके अंदर. Then moving forward to the point number 2, that is purpose of the request for information. क्या purpose है? What is the purpose of this document? So that patients can consult from wherever they are via phone calls or any media platform.
RFI का क्या पर्पस है? टेलीमेडिकेशन प्लेटफॉर्म का पर्पस नहीं. Market research. मार्केट रिसर्च में क्या? What Get the vendors have to offer. To Anyone else? finalize the Finalize the, yes. Finalize the vendors who are Finalize the available in vendors. So right. this RFI aims to gather information about the vendor who have a prior experience in delivering the telemedication or healthcare IT solution. And based on their response, we may shortlist vendor for a detailed RFP later. इस तरीके से यहाँ चीजें आएंगी. Then moving forward to the next point, that is point number 3, it information requested. And the information requested, as I told you that कि RFI is just like a questionnaire document. So in this, the clients wants a company information like company name, company size, number of employees in the company, and also the year of experience in the healthcare IT solutions, and also the key clients in the healthcare, and also portfolios, case studies, and reference. ठीक है. As I told you that कि in the requirement gathering session, when we are going to take the meeting with the client, so in the pre-phase meeting as a business analyst, we have to prepare some questionnaires, we have to prepare some portfolios, and only on the behalf of portfolios client will impressed, क्योंकि वो हमने काम कर रखा है. तो सेम एज इट इज इन द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्लाइंट वांट ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन और द प्रॉपर केस स्टडीज एज वेल एज द रेफरेंसेस एज वेल एज द पोर्टफोलियोज कि आपने इस डोमेन में क्या किया. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, द कंपनी इंफॉर्मेशन. So in this point also, along with the company information, along with the name, size, number of employees, years of experience, portfolios, case studies, the product and the service information also. Okay, the client wants a product or service information like the scenario is related to telemedication app. So in the product or service information, point number 2, that do you already have a platform like this or will you build custom? What? अगर पहले से ही है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो आप बनाओगे क्या उसको. सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लाइंट विल सेलेक्ट दिस वेंडर कि सही है या फिर नहीं है. द नेक्स्ट थिंग, इफ ऑलरेडी यू हैव ए प्लेटफॉर्म, देन व्हाट आर द फीचर्स, है ना. जैसे वीडियो कॉल हो गया, चैट हो गया, पेमेंट हो गया, पेशेंट की डेटा सिक्योरिटी एंड ऑल हो गया, इनक्रिप्शन हो गया. ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज द क्लाउड बेस्ड और ऑन लोकल बेस्ड या फिर परमिसेस बेस्ड. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन में हमारे पास द वेरी फर्स्ट पॉइंट कंपनी इंफॉर्मेशन, सब पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ. कंपनी इंफॉर्मेशन, सेकंड प्रोडक्ट या फिर सर्विस इंफॉर्मेशन. Because if the company is the product based company, then already a company have a proper product, and if the company is totally serviced, then company may have a solution or may not be. ठीक है, क्या पता वो कस्टम बनाए. Point number 3 is related to technical capabilities. In technical capabilities, client wants what technology stacks do you use, है ना, या हेल्थ केयर के रेगुलेशंस वगैरह क्या है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन लाइक हिप्पा या फिर जीडीपीआर. वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस थिंग. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस. So in support and maintenance, clients want a proper answer of the question, do you provide 24/7 in support or do you have a local support team in India or in US or in any country. ठीक है. And lastly, pricing, that is on high level of pricing. Okay. So if company have already a product, then clients want a answer, do you offer any freemium plan or premium plan or subscription based plan pricing or one time license, या फिर any additional cost for maintenance and all. ठीक है. पॉइंट नंबर 4 में सबमिशन गाइडलाइंस. सबमिशन गाइडलाइंस में जो डेडलाइंस वगैरह होगी फ्रॉम द क्लाइंट साइड,
लाइक 30 सितंबर 2025 एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कैसे बनता है RFI फ्रॉम द क्लाइंट साइड? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं ये सबमिशन गाइडलाइंस में क्या होगा? सबमिशन गाइडलाइंस में हमारी डेडलाइंस होंगी। डेडलाइन मीन्स टू से दैट कि जो भी वेंडर है, द वेंडर शुड बी सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या फिर जो रिस्पॉन्स होगा वो 30 सितंबर 2025 या फिर 25 सितंबर 2025। तो दैट इज डिपेंड अपॉन द क्लाइंट साइड कि मुझे तब तक रिस्पॉन्स चाहिए वेंडर की साइड से। और यहाँ पे सबमिशन गाइडलाइंस में मेल वगैरह भी होती है प्रॉपर कि किस पे हमें सेंड करना है। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस के लिए या फिर प्रोजेक्ट पूरा सबमिशन के लिए? प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट क्या बोले? प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस के लिए या फिर प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाए उसकी गाइडलाइन, मतलब टाइमलाइंस। नहीं, सबमिशन गाइडलाइन मीन्स रिस्पॉन्स गाइडलाइन। ओके। रिस्पॉन्स क्लाइंट ने फ्लोट कर दिया ना, अब फ्लोट करने के बाद द RFI विल, बहुत सारे जो क्लाइंट्स वगैरह उनके पास चला गया है। चला जाने के बाद जो है, जो हमारे कंपनीज वगैरह हैं वो फिर उसको सबमिट करेंगे। तो देयर इज दैट गाइडलाइन, सबमिशन गाइडलाइन। Akash, I have a question. यस, When you say client will float the RFI, means will they put this RFI in their website, or there is any specific way to reach out to the vendors? that is depending upon the company, either website, either via cold mailing, via newspaper and all. Okay. Okay. गवर्नमेंट का तो न्यूज़पेपर में ही आता है। Okay. ठीक है। सो व्हाई द क्लाइंट फ्लोट्स दिस RFI? क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाई द क्लाइंट फ्लोट्स दिस RFI? Client floats this RFI for a number of reasons. First, to identify the potential vendor who can deliver this particular solution. Correct. Second is, I mean, it will include sub task as cost effectiveness and rest of the things. Okay. All right. Good. So let me explain So this that- also. Okay, why the client floats this RFI? The very first point is that okay, the hospital doesn't want to waste the time on vendors who have no healthcare experience. The first of all, this is the main point. And the second point is related to filter out the vendor, जैसे अभी इन्होंने बताया. And also the third point is related to it saves times, cost and ensure only जो हमारे capable vendors हैं वही इस पे response करे, otherwise और कोई response ना करे. समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes. अब ये सारा का सारा सिनेरियो, द होल सिनेरियो इज फ्रॉम द क्लाइंट साइड, मीन्स कस्टमर साइड। ठीक है। इन दिस पार्ट देयर इज नॉट एनी सिंगल और नॉट एनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए BA, बट समटाइम्स क्लाइंट्स वांट ए BA ऑल्सो कि हाँ भाई ठीक है चलो तुम बता दो ये सब चीज़ें क्या होगी। ठीक है, तो मेजरली नहीं होता। ठीक है, मेजरली नहीं होता है, ये सारा क्लाइंट की साइड से आ रहा था। ठीक है, नाउ move towards the second scenario, that is RFI response. RFI response. तो यहाँ पे the client is Apollo Hospital. ठीक है, and Apollo Hospital floated RFI for the telemedication platform. And the vendor, let's suppose the vendor is Infosys, who is responding to RFI. अब जरूरी नहीं है there is only one vendor, that is depend upon the experience, that is depend upon the product availability in the market. Not only Infosys have that product, let's suppose TCS के पास भी होगा, तो that is dependent, but here I am only take the Infosys. Okay, so Infosys will respond to this RFI. How? So here now BA is responsible to respond the
on the RFI? Through RFP. Through RFP? नहीं, सबसे पहले तो RFI ही जाएगा, अभी RFP नहीं जाएगा. RFP की अभी बाद में बात है. We'll take care the RFP later. अभी सिर्फ response जाएगा. अभी client wants only a response. क्योंकि client initiate a question. क्वेश्चन ही इनिशिएट करा है ना क्लाइंट ने, कुछ और थोड़ी करा है. ये कुछ और भी करा है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चनर डॉक्यूमेंट है तो क्वेश्चंस ही. हाँ ये क्या लिखा है यहाँ पे? क्वेश्चंस है ना. हाँ जी. On the behalf of the questions, Apollo Hospital will select the vendor, and then after Apollo Hospital will contact for the detailed request for proposal from the client side, well, not from the company side. अभी तो उसने select ही नहीं करा ना. समझ में आ रहा है कैसे चीजें चल रही हैं? So the response from the vendor side is also RFI itself. Correct. RFI response, not only RFI. Okay. ठीक है. And on the behalf of this RFI response, Apollo Hospital will select the vendor and then called or mail for the detailed request for proposal document. ठीक है. All right. Great. So अभी as a business analyst, the very first question related to the company information है ना. कंपनी की इंफॉर्मेशन दोगे. सो नेम इज लाइक इन्फोसिस लिमिटेड, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक 3 लाख प्लस ग्लोबली. ठीक है. एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर IT है कि नहीं है. इफ यस देन मेंशन द numerical values like 15 plus years of delivering healthcare technology solution across UK, across US और जो भी कंट्री आपको मेंशन करनी होगी. एंड ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज की क्लाइंट्स. सो की क्लाइंट्स कहाँ कहाँ के हैं, लाइक UK के क्लाइंट, US के क्लाइंट या फिर इंडिया के क्लाइंट जो भी है, यू वी हैव टू मेंशन द नेम एज वेल. So this is the company information. The second point is related to the product या फिर service information. ठीक है. So in the product or the service information, you have to write a product or the service just like Infosys Health Connect. है ना. Infosys Health Connect जो है वो उनका product है. That is also take care about the telemedication platform. ठीक है. अब उसके अंदर what are the features supported to Infosys Health Connect like secure video consultation या फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग विद पेमेंट गेटवे या फिर ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जितने फीचर्स हैं इन द प्रोडक्ट पार्ट, यू हैव टू मेंशन द फंक्शनल फीचर्स along with the product name. कि what is the product name that will handle the telemedication situation, and if they handle the telemedication situation, then what are the features in the product. ठीक है. And along with that, as a BA you have to write the deployment option as well, like cloud पे deployment करोगे या on premises में deployment है, based upon the client preferences. ठीक है. Moving forward to the point number 3, that is related to the technical capabilities. So in the technical capabilities, you have to mention the front end language या फिर back end technology. Like in front end, Angular is there, React Native is there for the mobile apps, or in the back end part there is a Java, Spring Boot, Node.js. ठीक है. What's the database, like SQL हो गया या फिर MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, MongoDB हो गया, APIs कौन सी है, RESTful APIs हो गया, GraphQL APIs हो गया. So that is depending upon the product. So you as a business analyst, you have to check the tech stack with your technical team और या फिर product owner और या फिर CTO. ठीक है. And also along with that the technological stack, you have to mention the compliances as well. Like in the healthcare, there is a US healthcare law which is known as the HIPAA compliant या फिर HIPAA compliances. ठीक है. और GDPR compliances is also there, that is European privacy law. So in the technical capability part, you as a business analyst, you have to write two things. The first thing related to the technology stacks, and the second thing related to the compliances. Okay.
Point number 4 is related to the support and maintenance. So in support and maintenance, you have to mention the answer simply. Okay, we have a support model of 24/7 help desks available in my company and all, and also we have a local support in India. जैसे अभी क्लाइंट ने पूछा है, yes we have offices in Bengaluru, we have offices in Pune, we have offices in Delhi with the healthcare team, specialize in the healthcare team and all. ठीक है, एंड मेंटेनेंस के बारे में भी पूछा है. सो वी हैव ए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एएमसी अवेलेबल. तो जनरली एएमसी ही रहता है ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द प्राइस. द पॉइंट नंबर 5 रिलेटेड टू द प्राइस. अब प्राइस इज ओनली द हाई लेवल प्राइस. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो प्राइसिंग हाई लेवल मांगी है. डिटेल में तो होगी नहीं, डिटेल में तो आरएफपी में हम लोग मेंशन करेंगे. So high level price, always and always make sure that when you are going to give any price in the request for information document, then always and always give a range, not the exact value. And this range is coming from the CTO or any responsible person in the company who is take care about the product or who is take care about the services like business manager and all. Okay, so there is a also the licensing model depend upon the subscriptions. like cloud subscription हुआ तो अलग मॉडल होगा, ऑन प्रेमिसेस लाइसेंस हुआ तो अलग मॉडल होगा. तो दैट इज डिपेंड. ठीक है, एंड दिस इंफॉर्मेशन एज आई टोल्ड यू दैट कमिंग फ्रॉम द जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा कंपनी के अंदर. एंड along with that you have to write the implementation timeline also, like 12 to 16 weeks for the mid size hospital. That is depend. ठीक है. पॉइंट नंबर 6 इज रिलेटेड टू द पोर्टफोलियो या फिर केस स्टडी. केस स्टडी एंड द पोर्टफोलियो, लाइक जो भी आपने प्रीवियसली करा होगा. लेट्स सपोज मैक्स हेल्थ केयर में हम लोगों ने करा है, तो वो आई हैव टू राइट. एंड लास्टली कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. किसी का कोई क्वेश्चन? So these all are the 7 points that you have to mention as a business analyst in the RFI response. And if interviewer will ask a question of what about the RFI response, और आपने कभी RFI का response दिया है या फिर नहीं दिया है, now you have enough knowledge to answer the interviewer question कि yes I gave the RFI response. And the RFI response we have to take care about the 7 points, and these 7 points are this. समझ में आया? कोई क्वेश्चन किसी का कि आरएफआई क्या होता है, आरएफआई को रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? Yes guys. What do we have in contact information? So, contact information is just like the name, the email ID and the phone number. Name, your email ID or work email ID or your company phone number. Of the people who are going to work for the project. Yes, or for the Like- sales team also. No. जो भी उस टाइम पे हैंडल कर रहा होगा, whosoever is handle the telemedication platform in the sales team. Got it. All right. So why this makes sense? Why this all makes sense? This is according to the client or the Apollo gets to know the Infosys has the relevant experience or ready-made product compliances and cost range. Now on the behalf of the response, Apollo can now shortlist his Infosys for the request for proposal stage. अब now यहाँ पे अब जो second point आएगा, देख अब अपोलो ने क्या करा, अपोलो select the vendors for the RFP. अब यहाँ से RFP बनेगा.
समझ में आया कि नहीं आया? फ्रॉम द क्लाइंट साइड आरएफपी कैसा होता है एंड फ्रॉम द वेंडर साइड आरएफपी कैसा होता है? RFI. ठीक है. So if I am going to ask a question कि what is the purpose of RFI from the client side and the vendor side, then what will be your answer? क्या बताओगे आप मुझे? Clients To ask for the finalize the questionnaire. most appropriate and compatible vendor as per their requirements. Okay, all right. Anyone else? RFI is a questionnaire document where clients ask for the information regarding the project, the background check, and everything. And in the response, we give all the details. ठीक है. And you guys are like when you will land in the company ना, and your company have a government project, तब आप ये चीज़ बनाते हो. RFI हो गया, प्रॉपर RFI का रिस्पॉन्स वगैरह हो गया. ठीक है. जो प्राइवेट चीज़ें रहती हैं उसमें ये चीज़ें ज़्यादा नहीं बनती है. डायरेक्ट वी गो फॉर RFP एंड गो फॉर द BRD एंड लाइक फॉर SRD. सिंपल. ठीक है. हाँ जी. अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे जल्दी से पूछ सकता है. नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड डॉक्यूमेंट, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट. अच्छा, एक चीज़ और कि you can easily create the request for information with the help of ChatGPT. ठीक है. But the precondition is that कि you have a proper requirement knowledge from the client side कि what client need. And then on the behalf of the requirement or the narrow requirement, you will give the narrow prompt to the ChatGPT and ChatGPT will easily give you the answer. तो ध्यान रखो, ठीक है, कि ChatGPT से का भी हम लोगों को यूज़ करना है, जैसे मैंने उस दिन बताया था. Clear? Clear. Okay, all right. So moving forward to the next part, that is a request for proposal document. What is request for proposal document? First of all, already discussed this in requirement elicitation. What is a request for proposal? Why it is created? When it is created? Who create it? And who respond? बताओ यार, मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है RFP. क्या होगा request for proposal document in this scenario from the perspective of RFI with the same example? हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क होगा और प्रपोजल गाइडलाइंस, हमारा क्राइटेरिया, हमारा इंफॉर्मेशन ऐसे. ठीक है. देखो, request for proposal document is just like a formal invitation to the vendors to propose a proper solution along with the pricing, along with the approach, along with the methodology, along with the timeline. मतलब उसके अंदर सब चीज़ होगा. ठीक है. As I told you ना कि after post of the meeting as a business analyst you have to create the request for proposal document where you have to mention the scope, the functional requirement or basically timeline as well as the cost estimation and send it to the client. Why it is created? क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या जरूरत आ गई RFP की? क्यों क्रिएट कर रहे हैं RFP? ताकि फ्रॉम द क्लाइंट साइड क्लाइंट कंपेयर द वेंडर साइड बाय साइड related to the, yeah, on the basis of solution, on the basis of cost, on the basis of experience, on the basis of what the company did in the past or on the basis of expertise. Okay. So already Apollo Hospital, if Apollo Hospital floats the request for information in the market, then after 2 days, 3 days, and after the deadline, Apollo Hospital will get the uh,
number of request for proposal करेगा ना शॉर्टलिस्ट करने के बाद, तो वो बोलेगा ना कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट को. देन ऑन द बिहाफ ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, client or Apollo will compare the vendor side by side on the behalf of cost, on the behalf of solution, and on the behalf of expertise. And after RFI response, once the client has clarity on the business need, then only it is created. ठीक है, तो जो भी बिजनेस टीम होगी, मेजरली बिजनेस एनालिस्ट विल क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट. समझ में आया? Yes. कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? अच्छा, कंप्लायंसेस क्या होते हैं? व्हाट इज Sir, कंप्लायंसेस? किसी ने मुझसे नहीं पूछा, बट मैं ही पूछ लेता हूँ. व्हाट इज कंप्लायंसेस? Compliances are a set of rules and guidelines which can't be violated. For example, HIPAA, GDPR. So according to that, practical example. In this case, for example, in this case, Sharing the- clients' information. how the product will behave, Or how the for product example, features are properly aligned with the set of rules and regulation, that is the HIPAA compliances in the healthcare industry. right? For example, patient details can't be put out in the market. That is a simple example of it. Correct. Okay. So in the request for proposal document, we have to mention first of all the background. The second thing is related to scope of work. Third is related to technical expectations. Don't worry, I'll send every document to you guys. वहाँ से you will take the reference and create the document by your own. अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि what are the major points in the content or in the index of RFI or RFI response or in RFP. Okay. Deliverables. Proposal requirements. ठीक है, and lastly submission details. ठीक है, so this we will discuss in the next class कि हम लोग किस तरीके से RFP जो है वो क्रिएट करते हैं. सिंपल RFP भी देखेंगे हम लोग और डिटेल RFP भी, दोनों RFP देखेंगे. Then we will move towards the second part, BRD, FRD, SRD. And after this meeting, I'll share a proper document on RFI response or RFI response. Any question as of now? Then you can please ask. Otherwise, we can wrap up this session. sir, one quick question. बताइए. So RFI response, once you get green signal from the client that we are ready to give you the contract, then we make the RFP document, or do we send it in a loop, like first RFI response goes and then we send the RFP? Client float the RFI. Yeah. You as a company give it to response to client, like RFI response. Client Yes. will see the RFI response and select you as a vendor. Then client will request to you, okay, please submit your RFP. Then only you as a business analyst create the request for a proposal document. Otherwise, if there is a red signal, then there is a no need to create the RFP document. Okay, so there is a communication between RFI response timeline and RFP document that is done via client to our side, Yes. right? Okay. Ayush, so basically, client after RFI, they shortlist the companies, right? And then Correct. they request them for RFPs. And based on the RFPs, they compare and then select the final vendor for their project, right? Correct. On the basis of cost, on the basis and, of expertise, and on the basis of what company did in the past. Okay. Thank you. ठीक है.
please make sure that you guys have a proper crystal clear knowledge of the difference between all the documentation, just like RFI कब बनता है, what is RFI, RFP कब बनता है, RFP है क्या, BRD क्या है, FRD क्या है, SRD क्या है, कौन बनाता है, कब बनाता है, किसकी हेल्प से बनाता है, ठीक है, क्यों बन रहे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक, किसके लिए बन रहे हैं डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के नाम एवरीवन लाइक हैव एन आइडिया कि ओके इन द बिजनेस एनालिस्ट डोमेन देयर इज अ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, बट डिफरेंस क्या है, इंटरव्यूअर यहीं पे पूछता है. इंटरव्यूअर बेसिकली आज द क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस कि यस प्लीज टेल मी द डिफरेंस, आदर यू हैव 6 years of experience, 7 years of experience or 4 years of experience, doesn't matter. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग RFP भी देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे. ऑलराइट. Okay. ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन. Thank you. Thank you, Akash. Thank you.